Hello everyone, my name is Shubham Dubey and I welcome you all on CreativeEdge YouTube channel. So let me cross check if I'm audible to all the participants out there. So as I can see that you all are able to hear my voice, you all are able to see my screen as well. And I hope fonts are quite okay to you. And if you have any uh, problem with the font, do let me know so that I can work on it. And one more thing I would like to tell you that yesterday we completed the part one of our time and work. So in order to get the PDF of the previous lecture note and today's note to go in the in the description box so that आप इस lecture के notes को access कर पाए. Also please सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी फॉर एनी डिजाइन एंड आर्किटेक्चर एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेदर इट इज यूसीड एनआईडी निफ्ट और जेई बी आर्किटेक्चर नाटा एज वेल. वन मोर थिंग, if you are preparing for any private college as well for which are related to design and architecture तो आप इसके लिए भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं so that आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा. Now, without delaying further, let us start our today's session. तो हम यहाँ पर पार्ट टू डिस्कस हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का. कल हम लोगों ने पार्ट वन डिस्कस किया था जहां पर हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज हम फिर से सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं और आज हम जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेने वाले हैं दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ग्रुप. अब कंसेप्ट ऑफ ग्रुप क्या होता है बेसिकली. yesterday the question that we did वहां पर फॉर एग्जांपल A was doing his work, B was doing his work एंड फिर हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे थे कि और कि कौन कितने देर तक काम कर सकता है. टुडे वी आर नॉट लुकिंग वी विल नॉट बी लुकिंग फॉर इंडिविजुअल लेवल की A कितने दिन में काम कर सकता है, B कितने दिन में काम कर सकता है. टुडे वी आर गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टेड इन a group of person working together. For example, 10 people are working, 5 people are working together. ठीक है, so this is what we are more interested in. But before I move ahead, let me tell you one theory that is going to help throughout this session. अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है जब हम लोग वर्क की हम लोग बात करें तो कल हम लोगों ने वर्क को किस तरह से डिफाइन किया था. वर्क वॉज एक्चुअली इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम. आई होप एवरीवन रिमेंबर दैट कि वर्क को हम लोगों ने डिस्क्राइब किस तरह से किया था. इट वॉज एफिशिएंसी इनटू टाइम. नाउ सेकेंड, अब अगर मैं बात करता हूं आज की तारीख में तो यहां पर हम जो टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहां पर एफिशिएंसी कब बढ़ेगी या कब घटेगी इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मैन, राइट. तो यानी यहाँ पर वर्क को आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन और वुमेन और चिल्ड्रन वर्किंग इनटू टाइम पीरियड दे आर वर्किंग फॉर और नंबर ऑफ डेज दे आर वर्किंग फॉर. सो वर्क यहाँ पर आपका कहलाता है नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज. तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारी बुक्स में आपको मैन डेज टाइप भी लिखने देखने को मिलेगा. मैन डेज टाइप, तो आपको बहुत सारी बुक में ये कीवर्ड आपको देखने को मिल सकता है. सो वर्क कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज वर्किंग. फॉर एन एग्जांपल, if I say I give I have 5 people in my team. If I have 5 people in my team and each person is working for 2 days, each person is working for 2 days, and if I tell them to make and I give them assignment of making, each person has to make 4 assignment. Each person has to make 4 assignment. तो यहाँ पर आपका कितने असाइनमेंट 2 दिन में बन रहे हैं. सो यू हैव 5 पीपल, ईच पर्सन इज मेकिंग 4 असाइनमेंट, सो यू आर मेकिंग 20 असाइनमेंट इन अ डे. आप यहाँ पर 20 असाइनमेंट एक दिन में बना रहे हैं. तो अगर एक दिन में 20 असाइनमेंट बना रहे हो तो 2 दिन में कितने असाइनमेंट बना लोगे बच्चों. 40 असाइनमेंट यू विल बी मेकिंग. आई होप दिस आइडिया इज वेरी मच क्लियर टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस. तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज से आपने मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर एक चीज और थी असाइनमेंट. तो यानी कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर मैं एलोबरेट करने की कोशिश करूँ तो नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स ऑन विच योर वर्क डिपेंड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन में और भी सारी कंडीशन दी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है नंबर ऑफ आवर्स दे आर वर्किंग फॉर इन अ डे. ठीक है, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट में अगर आप जाएंगे तो 9 आवर्स अ डे एक जनरल टाइमिंग होता है. तो 9 आवर्स अ डे आपको टाइम दिया जा सकता है. कुछ भी नंबर ऑफ आवर्स आपको दिए जा सकते हैं इन योर क्वेश्चन.
One more thing that you can be given with is efficiency of these people. एफिशिएंसी भी यहाँ पर दी जा सकती है, राइट? तो यानी कि यहाँ पर आपके पास दो चीज तो पहले से ही आपने पुराने फॉर्मूले में देखी थी, दैट वाज एफिशिएंसी एंड टाइम। तो हमारे पास भी इस बार एफिशिएंसी है, टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज है और इन टर्म्स ऑफ आर है। सो एफिशिएंसी अभी पहले भी थी, अभी भी है। नंबर ऑफ डेज या टाइम आपके पास पहले भी थे, अभी भी है। इस बार हम थोड़े और ज्यादा स्पेसिफिक हो गए कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज भी एक फैक्टर है, नंबर ऑफ आवर्स भी मैटर करता है। What we are more interested in is the number of men working. कल तक हमने जो क्वेश्चन करे थे वहां पर हमारे एक ही पर्सन काम कर रहा था, तो वहां पर हम नंबर ऑफ मैन को इतने कंसिडर नहीं कर रहे थे। बट सिंस नाउ नंबर ऑफ men are going to be increasing in this case, so that is why number of men also matter. It could be number of women, number of children, right? So यानी कि आपका जो वर्क है ना, वो मैन इंटू डेज इंटू आर इंटू एफिशिएंसी। मैं शॉर्टकट में इस फॉर्मूले को बोलता हूँ एमडीएच वाला फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स। बस एक ई और याद रख लीजिएगा, वो आपके वर्क के इक्वल हो जाएगा। तो वर्क होता है एम डी एच ई, राइट? सो वर्क आपका इस तरह से होता है। तो यहां पर अब एक केस कंसिडर करते हैं, ठीक है? ओके, सो श्रुति, यू आर आस्किंग इज इट नेसेसरी टू प्रिपेयर कैट निफ्ट थ्रू कोचिंग? श्रुति, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, वहां पर बस कोचिंग में आपको ये होता है कि एक आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, ठीक है, कि किस तरह से प्रिपेयर करना है क्या नहीं करना है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। अगर आप पहले से वेल वर्स्ड हैं इन सब चीज़ों से, इन सब टॉपिक से, इन सब एग्जाम पैटर्न से, तो बहुत सारे बच्चे सेल्फ भी करते हैं। और अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप गाइडेंस के लिए भी जा सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट? सो आई होप मेरा आपको एक आंसर सही लगा होगा मेरा। सो नाउ लेट अस कम बैक टू अवर प्रॉब्लम वंस अगेन। सो वर्क इज इक्वल टू नंबर एम डी एच ई, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट। अब यहाँ पर आप एक केस कंसिडर करिए कि एक केस में ऐसा हो रहा है कि 5 men आर वर्किंग फॉर 2 days, वर्किंग 4 hours a day, ठीक है? So I can ask you, in how many days can two women can complete it if they are working 3 hours a day and right? So this is what I am asking for you. यानी कि आपके पास दो केस हो गए। एक केस में नंबर ऑफ men are working and in the second case number of women are working. तो यहाँ पर हम इन्हीं दो केस को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये ना कि यहाँ पर लेट मी ट्राई टू राइट डाउन कि वर्क यहाँ पर आपका कितना होगा। वर्क अगर मैं पहले केस की बात करूँ जहाँ पर नंबर ऑफ मेन काम कर रहे हैं फॉर सम डेज, फॉर सम आर एंड फॉर सम एफिशिएंसी। एक और सेट ऑफ पर्सन है जहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन काम कर रही है या कोई दूसरे सेट ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ वुमेन आप बोल सकते हैं, लेट आई एम डिनोटिंग इट बाय M2, फॉर D number of days, for H number of hours, and for whatever their efficiency that we are given with. तो आपके पास ये दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फॉर एग्जांपल 12 men can complete a piece of work in 16 days. In how many days can 4 people do it? अब को करने के लिए हम यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ मैन यहाँ पर 12 है, नंबर ऑफ डेज 16 है। तो ये पहले केस है। सेकेंड केस में आपसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 4 people डू इट? दैट मीन्स दिस इज M1 where 12 people are working and this is M2 where 4 people are working. So for 12 people the number of days required is 16. So number of days यहाँ पर 16 है। So how many days 4 people are going to require? This is what our question is. तो यहाँ पर आइडिया बच्चों ये होता है, आइडिया यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर 12 पर्सन काम कर रहे हैं 16 days तक। This is your total work. Now you actually do not need to multiply, right? Do not need to multiply means फिर सॉल्व कैसे करेंगे? कैंसलेशन बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, सो आपको 12 into 16 पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट राइट इट डाउन 12 into 16. So this is your total work. Now this work has to be completed by 4 men. So how many days they are going to take? Obviously number of men are 4 and number of days हमें निकालना है। तो हम इन दोनों वर्क को इक्वेट कर देंगे। नाउ व्हाई आई एम इक्वेटिंग दिस? फॉर वेरी वन सिंपल रीजन, यहाँ पर आप लोगों के पास जो वर्क 12 लोग कर रहे हैं वही वर्क मुझे
इन 4 लोगों से भी करवाना है, दैट इज व्हाई वी आर इक्वेटिंग देम। सो यही आइडिया हमें यूज करना है यहाँ पर भी, कि अगर आपके पास इतने सारी चीजें दे रखी है, नंबर ऑफ मैन भी दे रखा है, नंबर ऑफ डेज भी दे रखा है, नंबर ऑफ आवर्स भी दे रखा है, नंबर ऑफ एफिशिएंसी भी दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला ये बन गया और दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो बच्चों किस तरह से यूज करता हूँ। बेसिकली मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, लेट अस से W1 इज M D M1 D1 H1 E1. Let us take this W to the right hand side, so it will become 1 is equivalent to M1 D1 H1 E1 upon W1, right? So let us say this is equation number 3. और इसी तरह से if I use equation number 2, तो मुझे यहाँ पर if I take this W2 to the right hand side, I'm going to get 1 is equal to M2 D2 H2 E2 upon W2. अब मैं क्या करूंगा, आई कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो मैं इन 3 और 4 को, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेट कर दूंगा क्योंकि दोनों ही सेम है। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, नाउ द माय फाइनल फार्मूला आई हैव मेड इज दैट M1 D1 H1 W1 upon E1, let me correct myself, E1 upon W1, it is equal to M2 D2 H2 E2 upon W2. And this is what we actually are using in our first question, right? So let me solve it once again. So we had 12 number of person, they are working for 16 days. So M1 into D1 I'm doing. Now since number of hours efficiency is not been mentioned in the question, so we do not need to worry about that. We will be solving without them only. Now the question is asking in how many days can 4 people do it. So again, now we have been given number of men as 4, that is M2 की value 4 given है. We have to find out value of D2, how many days they are going to take. So simply हम यहाँ पर इस चीज को solve कर लेंगे, cancel कर लेंगे, तो 4 को if I take to the left hand side, I'm going to get 12 into 16 upon 4, it is equal to D2. So 4 fours are 16, 12 fours are 48. So D2 की value, my dear people, it is 48 days you are going to take if this 4 people wants to work. I hope सबको ये idea clear होगा. So basically the formula that we have to use throughout this session is this formula. So you should be noting down this formula और इसी के मदद से हम हमारे मैंडेज वाले क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है। Now let us move to the next question. Now have a look at this, what it reads. 20 men working 10 hours a day. So we have M1, we have H1. 20 men working 10 hours a day can complete a piece of work in 12 days. So we have number of days as well. How many men will be required? So M2 is something we are being asked. How many men will be required to complete the work in 24 days? D2 की वैल्यू गिवन है, working 5 hours a day. H2 की वैल्यू भी गिवन है. So again I will be using M1 D1 H1, it is equal to M2 D2 H2. Now where is E2 and W2? W1 W2 E1 E2, it has not been given, that is why we do not need to use them, right? So whatever information is you're given with, just use only that much formula. That is what the benefit of this formula is, कि जो चीज के बारे में mention नहीं किया गया है, so we do not need to assume it explicitly. I hope ये idea clear होगा सभी को. So M1 has been given as 20, they are working for 12 days. D1 की वैल्यू हमें 12 दे रखी है and H1 हमें 10 दे रखा है. It is equal to M2 is something we need to find out. 24 days is also mentioned and 5 is also given. Now, as I told you in the previous question as well कि आपको actual में पूरा multiply करने की जरूरत नहीं है. जो cancel हो रहा है, just cancel them and solve it. So 5 will go to the denominator, तो 5 10 से cancel हो जाएगा 2 time. Well and good. Then 24 1 time, 24 2 time. ठीक है, in fact ये
2 and 2 is going to cancel out. तो यानी कि सब कुछ cancel हो गया, सिर्फ 20 बच रहा है. That means M2 is going to be 20. That means 20 men are going to be required in order to complete the work that has been mentioned, right? तो यानी यहाँ पर you will be required 20 men to complete the work in 24 days, working 5 hours a day. I hope the idea is clear to all the participants out there. ठीक है? So just let me cross check as well if you are able to understand or not. Right? Now, let us move to the next question, people. Okay, now have a look at this question. Okay, so just wait for a moment. Okay, so I hope स्क्रीन आप सभी लोगों को अच्छे से दिख रही होगी. Just let me cross check. Sorry. So let us move ahead. Now, what the next question reads? क्या बोला गया है? 7 men working 8 hours a day can complete at 1/3 of the work in 36 days. यानी कि क्या क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मैन दे रखा है, 8 hours a day, नंबर ऑफ आवर्स दे रखा है, can complete 1/3 of the work. That means work is also given, that is W. In 36 days, number of days has also been given. The remaining work can be completed by remaining work अब कितना है? अब जरा remaining work कितना है हमको ये भी देखना पड़ेगा. Remaining work can be completed by 24 men. M2 की value we are given with. 6 hours a day. H2 is given in how many days? D2 is something we are asked. So again, I'm going to use the same formula M1 D1 H1, that is M1 is 7, D1 was 36, H1 is 8 upon W1. Now W1 is 1/3. 1/3 of the work has been completed, so you will be writing 1 by 3 in the denominator, right? Efficiencies again is not mentioned, so we will not be using that. This is going to be equal to M2, which is 24. D2 is something we need to find out. How many days we have to find out? And H2. So H2 is 6. Divided by यहाँ पर भी वर्क आएगा. Now remaining वर्क की बात अगर हम करें, so 1/3 of the work has been completed. 1/3 of the work का मतलब क्या होता है? If the work is 3, one has been completed. If there are 3 assignment, one assignment has been completed. That means how many assignment are left? Out of the 3 assignment, we are left with 2 assignment. So this is what the remaining work is, right? तो यहाँ पर अब थोड़ा सा कैंसलेशन करने की कोशिश करते हैं, सभी बच्चे साथ में करेंगे हम लोग. सो 8 and 24 it is cancelled out 3 times. Then 6 and this 36 is cancelled 6 times. Now this, in fact you can see that 1 by 3 and 2 by 3 is there in the left hand and right hand respectively, and this 3 is in the same position in both the left hand and right hand side. ठीक है, दोनों में आपका जो 3 है, अगर मैं सिर्फ इस फ्रैक्शन की बात करूं 1 by 3 की, if I talk about, so you can see that 3 is in the denominator, here also 3 is in the denominator, so you, if you wish to, you can cancel it out. ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. तो व्हाट यू कैन डू इज दैट 2 by 3 डिनोमिनेटर में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू लुक लाइक दिस 7 इंटू 6 इंटू, अब ये इसको पूरा एक नंबर कंसिडर करिए. मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई नंबर होता, लेट अस से अगर कोई नंबर 4 होता, तो आप क्या कहते हैं, 4 विल बी गोइंग टू द फॉर मल्टीप्लीकेशन, बट इंस्टेड ऑफ 4 वी हैव 2 by 3, तो 2 by 4 विल बी गोइंग फॉर मल्टीप्लीकेशन 2 by 3, right? In the same way here 1 by 3 will go in the multiplication in the right hand side, so it is going to be 3 into d2 into 1 by 3. Now 3 and 3 are going to be cancelled out, 3 and 6 are going to be cancelled out 2 times. So you can see that 7 into 2, 14 into 2 is 28. So D2 is going to be
28. आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. Let me check in the chat box as well. All the participants, if you are able to understand, do thumbs up in the chat box. बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी आप शेयर करिए so that उनको भी benefit हो. Now, this is the value of D2, right? Now, let us move ahead. Now, this is a very good question. Now, what it reads in a hostel, the food is available for 200 days. So, we have been given the number of students, number of men to be more appropriate, number of students. ठीक है. फॉर द पीरियड ऑफ 54 डेज, तो नंबर ऑफ डेज भी आपको दे दिया गया है, नंबर ऑफ डेज भी आपको दे दिया गया है, नंबर ऑफ मैन आपको दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ डेज आपको दे दिए गए हैं. ठीक है, तो यानी कि आपका टोटल वर्क कितना है, बेसिकली 200 इंटू 54 इट इज गोइंग टू बी. आफ्टर 15 days some more students arrive. That means until 15 days everything was going in the same way as it was started. ठीक है. After 15 days, what happens? Some more students are arrived. Now, how many students are arrived? As of now, we have not been mentioned. So, some more students arrive. The remaining food lasts for 20 days. So, obviously, now you have more number of students. So, the food will last for less number of days. So, we have to find out for how many students arrive. Now, again, this is again the formula of M1 MDH that we learned. How we are going to use that? First of all, you need to understand that total food. What actually? How can we find out total food? टोटल फूड यानी कि यहाँ पर टोटल वर्क की जगह पर टोटल फूड, यहाँ पर फूड की बात हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग टोटल फूड. नाउ हाउ विल यू डिफाइन टोटल फूड? So the food must be segregated in two parts. One is before the arrival of 50, before the arrival of new people. You can see that after 15 days, some more people arrived. So food before arrival, food before arrival plus food after arrival. These are the two terms in which you will be defining your food, right? So total food की अगर बात करूं, so total food was for 200 students, it was for 54 days. So 200 into 54. This is what your actually total food was. Now, when people did not arrive, that when students did not arrive, that means for 15 days, everything was going normal. Everything was going normal for 54 days. So there were 15 days were there. And how many students were there? You had 200 students. So for 15 days, 200 students consumed food. That means this much of food had been consumed by them, right? Plus, after 15 days, some more students are inducted. Now, since some more students are inducted, so can I write those students must be 200 plus X? Let us say X number of students arrive. Let us say X students arrive, and that food lasted for 20 days. That food lasted for 20 days. So you can see that the formula is still the same, number of men into number of days plus number of men into number of days. But this time our food or our work has been split into two parts for one very simple reason, because was an arrival of 15 students. Sorry, there was an arrival of some students after 15 days, right? I hope everyone is able to understand the idea. So how can we solve this? So basically, let us take this part to the left hand side. How we are going to take that? Basically, again, I am saying to you that you actually do not need to multiply that. आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे? Just take this part as it is to the left hand side. तो आपके पास क्या बचेगा? 200 into 54 minus 200 into 15. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड. तो आप x को कॉमन ले लेंगे, y माइनस जेड कर रहे होंगे. आई होप आइडिया क्लियर होगा. सो 200 कैन बी टेकन एज कॉमन इंटू 54 माइनस 15 इज गोइंग टू बी 39 एंड इट इज इक्वल टू, अब RHS में क्या बच रहा है, वी आर लेफ्ट विथ 20 इंटू 200 प्लस x. तो यहाँ पर 20 एंड 200 इज कैंसल्ड आउट 10 टाइम्स.
So 10 into 39 is going to be 390. It is equal to 200 plus x. So x is going to be 190. This is what our value of x is. Now, what x was representing actually? S- The x was representing some more students. So how many more students arrived? 190 more people arrived after 15 days. This is what we had to find out. I hope सब clear होगा ये idea. Now let us move ahead. ठीक है? So अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? In a cantonment, food is available for 200 soldiers. It is similar question that we did earlier as well. In a cantonment, food is available for 200 soldiers for 120 days. So total food आपका यहाँ से निकला के आ जाएगा बच्चों. 200 people हैं, 200 men हैं, and 120 days आपको given है. And each soldier consumes 750 grams of food a day. Now, what exactly it is? We generally use three terms, four terms: work, number of men, number of days, number of hours, and efficiency. These five terms we generally use in this formula. So what exactly it is? Number of men has been given as 200. Number of days has been given as 120. Number of hours, obviously it is not talked about in this question. So out of the two things, that is work and efficiency, it must be any one of them. Now let us read this question once again. And each soldier consumes 760 grams of food a day. That means in one day you are consuming 760 gram. Obviously, when the question mention about one day, it must be talking about efficiency. So this is the efficiency mentioned in the question, 760 grams a day. I hope सभी को clear हो रहा होगा. After 20 days, 50 more soldiers arrive, and now each soldier consume 950 grams of day. So that means you have been given value of E1 and value of E2. How long did the remaining food sustain? अब इसको किस तरह से कर रहे होंगे? Again, the idea is very clear. 200 soldiers we had, 120 days number of work. Again, the idea is very simple. Total food का concept अभी भी वही है. Total food जो है, let me write it down. Total food आपका जो है ना बच्चों, it is still food before arrival of new soldiers plus food after arrival. सो आई होप आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल रहे होंगे. हमने देखा कि पहले में डायरेक्टली एम डी एच वाला फार्मूला यूज हो रहा था. अब आपके पास थोड़ा सा इस फार्मूले का एक वेरिएशन है, यानी कि दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है. सो फूड, टोटल फूड आपका कितना था? 200 सोल्जर. नंबर ऑफ मैन यू हैड 200. नंबर ऑफ डेज यू हैड 120. Number of hour is not mentioned, right? And we have mentioned efficiency, that is 760. Now you, again, as I told you, you do not need to multiply each of these big numbers. Just write them as it is. Okay? So this was the total food actually. Now before arrival, तो before arrival में हम अगर देखें तो क्या होता है? Now after 20 days, 50 more soldiers arrived. That is, until 20 days everything was going normal. ठीक है. Until 20 days, you have number of days to be 20. You still had 200 soldier, and each soldier was consuming 760 grams of food. That means this much of food has been consumed by 200 soldiers in 20 days. Are you getting my idea? Now, अब क्या बच रहा है? अब जो बच रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ. So food after arrival. So after arrival means 50 more soldiers arrived. That means from 200 now you have 250 soldier. So 200 पहले थे, अब आपके पास 250 soldiers हैं. And each soldier is consuming 950 grams of food. Each soldier is consuming 950 grams of food. ठीक है. Now how long did the remaining food sustain?
सो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट कि डी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। D2 की वैल्यू बेसिकली बच्चों आपको निकालनी है। नाउ अगेन हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट, let us take this part to the left hand side again। it looks like x into y into z, और यहाँ पर भी क्या है, x into y into z है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो यू कैन सी दैट 200 into 760, 200 into 760 यहाँ पर भी है, एंड 200 into 760 यहाँ पर भी है। तो मैं इसको कॉमन ले लिया मैंने। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 120 minus 20, 120 minus 20, this is equal to 250 into D2 into 950। So let us try to cancel off। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम लोग बच्चों। How we are going to do that? So we have 200 into 760 into this becomes 100 divided by 250. 250 will go to the denominator, multiply by 950 is also going to go in denominator. Now let us cancel, start our cancellation process. So 0, 0 has been cancelled out, right? Now what is left? 25 and 100. So 5 fives are 5 20 time, 5 1 time, 5 4 time. So 25 has been vanished completely. Now 95 is we are left with. So 5 से cancel करेंगे 19 time, 5 से अगर मैं इसको cancel करूं तो ये हो जाएगा, it is going to be 1, it is going to be 152। yes। अब कैसे? Now students, I always advise my people to remember table up to 12। टेबल्स आपको 20 तक तो अच्छे से पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो 19 के टेबल में 152 आता है 8 टाइम, राइट। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 8, वी आर लेफ्ट विथ 4, वी आर लेफ्ट विथ 2। So 8 into 2 is 16, 16 into 4 is 64। So 64 is going to be the value of D2. That means number of days the food will last is 64 more days। I hope the idea is clear to you। ठीक है, तो इस तरीके के जो ट्रिकी कैलकुलेशन होते हैं ना बच्चों, इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। द आई हैव डिलिबरेटली ब्रॉट दिस क्वेश्चन सो दैट आप इसको बेहतर तरीके से, किस तरह से कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में किस तरह से हैंडल करना है, दैट इज व्हाट माय मोटो इज इन दिस क्वेश्चन एज। सो दिस इज व्हाट वी डिड। सो आई होप क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को। एज आई टोल्ड यू अगेन दैट यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स एज वेल, कि अगर कोई डिफिकल्टी अगर आपको हो रही है तो, ठीक है। So let us move to the next question now. Now, what has been told in the next question? Now, let us read it together. 30 men complete a piece of work. Just let me scroll up. So 30 men complete a piece of work in 38 days. Number of men has been given. Number of days has been given. After 25 days, 5 more men joins and the work completes 1 day earlier। ठीक है। सो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। कि नंबर ऑफ मैन आर स्टिल देयर, नंबर ऑफ डेज आर स्टिल देयर, और वैसे ही कुछ कहानी के 24 डेज के पास 5 लोग आ जाते हैं। बट द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन हियर इज दैट व्हेन 20 आफ्टर 25 डेज 4 men join, what happened that what happened there is that the work completes 1 day earlier। Now this is something we are seeing for the first time in all the question that we did today, कि आपका काम ही एक दिन पहले हो गया। दैट मीन्स यू प्लान योर वर्क फॉर 38 days, you planned your work for 38 days, 30 men can complete this piece of work in 38 days, but it happened in 1 day, it happened 1 day earlier। that means 37 days में ही आपका काम हो गया, राइट। तो एक्चुअली में आपका कितना काम हुआ, अब ये कैसे पता लगाएंगे, टोटल वर्क कैसे, ये कैसे पता लगाएंगे बच्चों। सो इन दिस इफ आई विश टू फाइंड आउट द टोटल वर्क, तो वो कैसे पता लगाएंगे, 25 days तक, for 25 days how many people were working, 30 people were working। so for 25 days, this is the 25 days, how many people were working, 30 number of men were working।
This is the number of men and this is the number of days. So they worked for 25 days. Now still the work is not completed. So what happened? Five more men join. So now from 30, you have 35 men. You have 35 men and they complete the work one day earlier. यानी कि इन लोगों ने कितना काम किया होगा बच्चों? 35 men are working. They must be doing for 12 days. Because 38 में से एक अगर आप माइनस करेंगे क्योंकि काम एक दिन पहले हो गया था यानी कि your work lasted for 37 days. And out of this 37 days, 25 days were 25 days were spent by these 30 men. Then five more men joined. So now you have 35 number of men and 12 days it lasted for. So total work ही आपका इसके इक्वल है. समझ में आएगा सभी बच्चों को, right? So if you are not able to understand, do let me know all the people. So this is how your total work is found out. Now what happens? Had five men not arrived, how long would have the work lasted? तो ये आपका total work है. Again, actually you do not need to multiply them, then you add them. This is one of the process. Obviously, if you wish to आप पूरा multiply करेंगे, add करेंगे, but वहां पर time जाता है. तो इसको बस ऐसा लिख के रखिए. अब क्या बोला गया है? अब तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ज्यादा कर ही नहीं रहे हैं. जितना कैंसलेशन करते हैं उतना अच्छा होता है कैलकुलेशन में. So the question is asking, had five men not arrived, how long would have the work lasted? तो यानी कि अगर फाइव मैन ये पांच लोग नहीं आ रहे होते, that means if we had only these 30 people only, if we had only these 30 people, so how long did the work last? So that means you have to find out if these 30 people were working, so for how long this work would have been completed. So this is going, तो हम इसको इसके इक्वेट कर देंगे. ठीक है, तो यहां पर अब कैंसलेशन स्टार्ट करते हैं. तो फाइव सिक्स टाइम, फाइव से कैंसिल करता हूं मैं सेवन टाइम, फाइव से कैंसिल करता हूं मैं यहाँ पर सिक्स टाइम. फर्दर कैंसलेशन में लेट अस यूज सिक्स, सिक्स वन टाइम, सिक्स टू टाइम, सिक्स वन टाइम. So you can see that in the right hand side only D2 is remaining, while in the left hand side you are left with 7 into 2, 14, and it is 25. So D2 is going to be 25 plus 14, that is 39. Now, what does this 39 indicates? It indicates that they planned their work to get completed in 38 days, but actually the work would have been completed in 39 days. Means it means that their prediction was wrong earlier. In the question, they had predicted that 30 men can complete it in 38 days, but actually it would have been completed in 39 days if these 30 people were working. So I hope the idea of this question is clear to you. आपने देखा कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से क्यों अलग था. ठीक है, चलिए. Now have a look at this question. Again, it is a very easy one. Why it is a easy one? Again, the direct formula is going to be used here. So contractor took a contract of completing a work in 124 days. Number of days has been mentioned. For that, he hires 120 men. So again, you can see that you have 124 men and you have 120. Okay, you have 124 days and you have 120 men. So number of work is going to be 124 into 120, right? After 64 days, he gets to know that two-third of the work has been completed. ठीक है, मतलब for 64 days everything was going fine. This is the total work by the way. ठीक है, so हमें ये मालूम पड़ता है कि after 64 days he gets to know that two-third of the work has been completed. अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो 64 डेज तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. फॉर 64 days हाउ मेनी पीपल वर वर्किंग? You had 120 men. So for 64 days, 120 people worked. And how much of the work did they complete? They complete two-third of the work. यानी कि उन लोगों ने, ये आपका नंबर ऑफ डेज है, ये आपके नंबर ऑफ पेन है. ठीक है, और इन लोगों ने कितना वर्क कर दिया है?
2/3 of the work has been completed. Are you getting my point? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, 2/3 of the work has been completed. How many person can be sacked? That means the contractor wish to remove some of the person from the job so that the work completes on time. आप देख रहे हैं ये काम काफी जल्दी 64 डेज में ही मोर देन हाफ काम हो गया है, एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विथ ऑलमोस्ट हाफ नंबर ऑफ डेज, मतलब 124 डेज थे, आपने 64 डे यानी कि लगभग आधे दिन में ही यू हैव कंप्लीटेड मोर देन हाफ वर्क. So obviously the contractor wants to remove some of the people so that this work lasts for the last for more number of days. More number of days means still उतने ही दिन में काम खत्म हो जितना उसने डिसाइड किया था, जल्दी काम खत्म ना हो जाए. This is what the contractor wants in this question. So that means we wish to complete our work in the remaining days only. However, we know that we can complete it earlier as well, बट द कॉन्ट्रेक्टर विश टू कि नहीं भाई काम तो 124 डेज में ही होना चाहिए. तो यानी कि 64 डेज तो बीत चुके हैं, अब कितने दिन बच रहे हैं, अब कॉन्ट्रेक्टर चाह रहा है कि 60 दिन तक काम और चले. द वर्कर स्टिल वर्क फॉर 60 डेज. ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस 120 men इज अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ men. तो वो क्या कर चाहता है कि इस 120 में से कुछ पर्सन को मैं रिमूव कर दूं, इस 120 में से मैं कुछ पर्सन को रिमूव कर दूं, so that मेरा जो बचा हुआ काम है, now 2/3 of the work has been completed. That means out of 3 assignment, 2 assignment has been made, 1 assignment is left. So 2/3 में से ये जो बचा हुआ 1 assignment है, 1/3 काम है, इसको मैं खत्म कर दूं. कब? बाकी की बचे हुए दिन में. तो ऑब्वियस बात है कि एक्चुअल में आपको 120 मैन की जरूरत नहीं है, 120 से कम ही मैन की जरूरत है. ठीक है, सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. सो 3 and 3 is cancelled out. Now in the denominator part you are left with 2 in the left hand side, 1 in the right hand side. So in the right hand side it does not matter, 1 in the denominator. 2 can be cancelled out. 2 ones are 260 times. Then this 60 and this 60 is cancelled out. तो लास्ट में हमारे पास बचता है 64 is equal to 120 minus x. तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों निकाल लेंगे. You are going to get x to be equal to 120 minus 64. That is, if I'm not wrong, it is 56. That means the contractor should be sacking 56 workers so that he get his work on time. Though he can complete earlier, but he wants to get this work on time, not before time, right? So this is how we solve this question. I hope the idea must be clear. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. Now have a look at this question. What it reads: 12 men or 18 women can complete a piece of work in 14 days. Now, this question is different from the previous one that we did. So again, a new variety. अब यहाँ पर आप देखिए कि you can see that 12 men or 18 women. That means you have either you can choose men or you can choose women. But number of men are going to be 12, number of women are going to be 18, and they can work the same work in 14 days. So I should be writing in this way. I have 12 men. Now, why I am explicitly writing men instead of simply writing 12 into 14? The reason is that M here represent efficiency of men. ठीक है, नंबर ऑफ मैन तो ऑलरेडी आपको 12 दे ही रखा है बच्चों. ठीक है, नंबर ऑफ मैन आपके पास ऑलरेडी दे रखा है. अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ना कि यू कैन सी दैट लेस नंबर ऑफ मैन आर रिक्वायर्ड, मोर नंबर ऑफ वुमेन आर रिक्वायर्ड. दैट मीन्स एफिशिएंसी वुमेन की कम होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सो 12 men. And how many days they are going to take? Number of men is 12. Their efficiency को आप EM भी बोल सकते हैं चाहो तो, या सिंपली M भी बोल सकते हो. ये अपने ऊपर है बच्चों, हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो 12 नंबर ऑफ मैन आर देयर, और उनकी एफिशिएंसी अगर आप देखो तो लेट अस से एफिशिएंसी ऑफ 12 मैन इज गोइंग टू बी EM. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि E कहाँ से आ रहा है, क्यों ले रहे हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है. इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट यू टेक, एनी क्वेश्चन इफ यू टेक, you can see that 120 men was talked about. That means men we were talking about. And
From the starting of the question till the up up to the last of the question, we had number of men, right? वहां पर कहीं पर भी नंबर ऑफ वुमेन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. दैट इज वाई एफिशिएंसी वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा बच्चों कि यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज ऑल्सो कंसीडर्ड, बिकॉज अब यहाँ पर कंपैरिजन होगा. पिछली बार कंपैरिजन नहीं था क्योंकि दोनों मैन पहले भी काम कर रहा था, बाद में भी काम कर रहा था, तो वहां पर उनकी दोनों की एफिशिएंसी कैंसिल हो जाती है अगर आप अज्यूम करते भी तो. बट यहाँ पर यू हैव two different people, one is men, second is women, that is why you will have to consider their efficiencies as well. ठीक है, so इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग. Now, ठीक है, so we have 12 men, they can complete some piece of work in 14 days. So let me write down 12 men can complete in 14 days. 18 women can also do the same work in 14 days. So 18 women can also do the same work in 14 days. That means they are also doing the work that the people are doing. So obviously these two work must be equal. अब यहाँ पर आपको M और W के बीच में रिलेशन मिल जाएगा. But before that, let me tell you, either if you talk about left hand side or the right hand side, both are representing your work. Work is representing in terms of men as well, in terms of women as well. Which do I need to use? It is up to you, right? So let us solve it together. So now you must be thinking of cancelling it. So yes, we should be cancelling 14 and 14. So you can see that 12m, it is equal to 18w. Still can be cancelled 6 times, 2 times, 6 3 times. So you can see that 2m is equal to 3 times of w. Now from here, I can see that let us take this w to the left hand side. So it is going to be 2m upon w. It is equal to 3. Now this 3 should be moved to the right hand side. So it will come in denominator. So it is going to be 3 upon 2. That means efficiency of men is 3 times and that of woman is 2 times. Are you getting my point? राइट. सो एम और डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिल गई है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी की वैल्यू हमको मिल गई है. अब हमें क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट इट. सो वी हैव टू फाइंड आउट टाइम in which they can complete their work. So time can be used. The previous formula, the first formula that we studied in this chapter was work upon efficiency. ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्यों लिख रहा हूं मैं, मैंडेज वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूं. अरे एक यहां पर जो है ना, आपको एफिशिएंसी क्योंकि दी हुई है ना, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो वर्क कितना है, सो वर्क तो एज आई टोल्ड यू, आइदर यू कैन यूज द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड. सो सपोज इफ आई यूज द लेफ्ट हैंड साइड 12m इंटू 14. सो वर्क कितना है, 12m की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 14. दिस इज योर वर्क अपॉन एफिशिएंसी. तो व्हाट इज द एफिशिएंसी, तो यू हैव 8 men and 16 women. So 8 men and 16 women का मतलब क्या होता है, so 8 m की वैल्यू you have 3 plus 16 women की वैल्यू you have 2. So it is going to be 24 plus 32. So after solving it must be 56. So 56 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों. Are you able to understand? So let us cancel 7 2 time, 7 8 time, 2 1 time, 2 4 time, 4 3. 3 into 3 is going to be 9. So 9 days you are going to take. 9 days you are going to take. I hope आइडिया क्लियर होगा सभी बच्चों को. सो 9 days you are going to take in this question. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे. अब क्या बोला गया है, 2 men can complete some work in 6 days. So again the similar kind of question we are seeing. 3 women can complete the same work in 16 days. Again men and women. So obviously यहाँ पर भी comparison होगा. And how many days can 1 man and 2 women complete it? So now you can see that 4 men can complete some work in 6 days. So this is the total work that you are going to use. The same work is completed by 3 women in 16 days. So 3 women in 16 days. So you can see that this either the left hand side or the right hand side is set to be your work.
In how many days can one man and two women can complete it? So one man and two women. So that is, we need to first find out the value of M and W, and then these value will be helpful to find out the value of efficiency of one man and two women. So if I move ahead with this idea, तो यहाँ पर अब हम किस तरह से कैंसिल करें, किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों? So let us try to solve this. So let me change color of my marker. So 3 one time, 3 two time, right? 4 twos are 8, and 8 and 16 cancel two times. So you can see that M is equal to 2 times of W. That means M upon W, it is equal to 2 or 2 upon 1. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी M की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो 2 है, W की वैल्यू इज 1, तो हमें निकालना है टोटल। पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि टोटल वर्क आपका जो है वो एक मैन और दो वेमेन के द्वारा कितने दिन में किया जा सकता है। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। सो सो वर्क हमारे पास कितना है बच्चों? Either you can use the left or the right hand side. It is up to you. So again, I'm using the left hand side. So 4 men. Men की वैल्यू यहाँ पर कितनी बच्चों? M की वैल्यू is 2 plus 4M, नहीं प्लस नहीं आएगा बच्चों, 4M into 6 वर्क। सो ये आपका हो जाएगा 8 into 6 48। और टाइम की अगर आप बात, टाइम तो हमें निकालना है, एफिशिएंसी अगर आप बात करो तो एफिशिएंसी क्या है? 1M प्लस 2 वेमेन। तो 1M और 2 वेमेन के, तो 1M, तो 1M की वैल्यू यहाँ पर कितनी बच्चों? 2 है, प्लस 2 वेमेन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 है, तो 4 के इक्वल है। सो यानी कि आपकी जो एफिशिएंसी है ना बच्चों, दैट इज इक्वल टू 4। सो टाइम इज गोइंग टू बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, दैट इज 48 अपॉन 4. So 12 days you are going to take. So you can see that the previous question and this question is similar, very similar. कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में ज्यादा। ठीक है, सिर्फ नंबर्स का ही इधर उधर हुआ है, बाकी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई बिलीव इज समवट सेम। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, नाउ हियर यू रीड द कीवर्ड, 6 men and 4 and 8 women can complete some work in 10 days. So this time you have not segregated men and women, but you have make them combined to do the work. That means 6 men are also working, and that means plus 2 women, 8 women are also working. So this is your number of men or number of women, right? So number of people you have into number of days, MDH वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ मैन की जगह पर यहाँ पर मैन भी है, women भी है, दैट्स व्हाई आई हैव कंबाइंड देम, एंड नंबर ऑफ डेज यानी कि 10। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ टोटल वर्क। सो योर वर्क इज दिस टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ M and W both. In the previous question, it was either represented by M or it was either represented by W. और पहले के क्वेश्चन की अगर बात करें तो it was totally dependent on number of men only. ठीक है, सो यू कैन सी द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हियर। तो यहाँ पर आपके पास आपके M टोटल वर्क की वैल्यू आपको ये गिवन है। नाउ इफ यू विश टू मल्टीप्लाई यू कैन, बट स्टिल आई एम राइटिंग दम एज इट इज, कि अगर कुछ कैंसिल हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए, कुछ इजी हो जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। सो दिस इज योर टोटल वर्क। नाउ व्हाट इट रीड्स फर्दर, 26 men and 48 women can do it. That means this same work. That means I will use the equality sign. Now I have 26 men and 48 women. They can do in 2 days. ठीक है, 48 women. Again, I am will be interested in finding out the relation between M and W. ठीक है, फिर हमसे पूछा है हाउ मेनी डेज कैन 15 men and 20 women डू इट। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, आखिरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसे हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आई विल बी फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन M and W। तो अब यहाँ पर कैसे होगा, लेट अस कैंसल फर्स्ट, इफ यू विश टू कैंसल, तो ये आपका वर्क ही है, तो 2 से 5 टाइम कैंसल, 5 will be multiplied in the bracket, so 5 into 6 is 30M plus 40W, it is equal to 26M plus 48W. Now let us take M to the left hand side, so 30 minus 26 is 4M. Let us take
40W to the right hand side. So 48 minus 40 is going to be 8W. So 4 and 8 is cancelled twice. So M is equal to 2 times of W. That means M upon W, it is equal to 2 upon 1. So हमें क्या पूछा है, in how many days can 15 men and 20 women do it? Now अगर आप टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे. सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चों? Work is going to be either you can use the left hand or the right hand side part as per your choice. I am using the left hand part. So 6 into m, that is 6 into m की value is 2 plus 8 into w. 8 into w की value is 1. Generally students do silly mistake here कि वो बस w को इतना ही consider करते हैं. Actual में if you remember, तो आपके जो w की value थी ना बच्चों, वो कितनी थी? वो 6m प्लस 8w नहीं थी, वो मल्टीप्लाई में 10 भी था. फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन वी कैंसल्ड दिस 10, बट द वर्क डज नॉट चेंज. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 10 हियर एज वेल. कितना हो जाएगा ये? 12 प्लस 8 इज 20, 20 इंटू 10 इज 200. दिस इज द वैल्यू ऑफ w. सो आई होप this idea is clear. ठीक है? So this is the value of W. Now what we need to find out, so in how many days can 15 men and 20 women do it? 15 men, 20 women. तो efficiency भी निकाल लेते हैं. So 15 men, M की value I have 2 plus 20 women. So 20 women, W की value I have 1. So it is going to be 30 plus 20 is 50. So work upon efficiency. Finally, we are going to have work upon efficiency. Work was 200 upon efficiency is 50. So it is cancelled 4 times. So in 4 days, you can complete this work. So I hope everyone is able to understand these questions that we discussed today. Okay, so this was all about time and work. We took multiple questions in order to solve, in order to help you with this topic. For the PDF of this questions that we did today, that we did yesterday, you can go in the description box. You can download that from there. Also, please subscribe to this channel so that you will be getting the regular updates related to design and entrance, design and आर्किटेक्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन. ठीक है? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों. तो अगेन वी विल बी कमिंग ऑन विद न्यू सेशन, न्यू लाइव सेशन, सो दैट आपका एप्टीट्यूड और भी बेहतर होता जाएगा. एंड फॉर द प्रीवियस वीडियो यू कैन गो टू अवर इन द वीडियो सेक्शन वेयर वी हैव बीन डूइंग, we have been covering multiple topics for your examination. ठीक है? Whether it is related to drawing, it is related to aptitude, quantitative aptitude, verbal, non-verbal, everything we are trying to cover. So this was all about today's session. I hope you must have enjoyed this session. Thank you everyone. Take care.